हेलो सर, कैसे आप? मैं बढ़िया। और सर कहाँ से आए थे आप? मैं आया हूँ राजनगर से आए थे सर। जैसे हमने आपकी बाइक की पीपी इंस्टॉल करी है, कहीं से आपको लगता है ना इसकी पीपी इंस्टॉल हो गई या कहीं भी कटिंग वगैरह दिख रही हो? नहीं, आई मस्ट से यार सर्विसेज आर लाइक एक्चुअली फैबुलस एंड पीपीएफ मुझको बहुत ज्यादा पता नहीं था कि होता क्या है, कैसे होता है, बट दीस गाइस आर टेकिंग केयर ऑफ इट एंड द पीपीएफ लुक एक्चुअली वेरी नेचुरल। इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि पीपीएफ या पॉलिथीन लगा है नहीं लगा है। Quality also, in fact, they have given like a 5 years warranty, so I must recommend this. Seriously. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. कैसे हैं आप सभी गाइस? आज अपने पास आई थी रॉयल एनफील्ड जीटी कॉन्टिनेंटल 650। इस पर हमने करी है अपनी पैंट प्रोस्टल फिल्म इंस्टॉल 5 इयर्स वाली है। ये देख सकते हैं गाइस, इस पर हमने आपके वाइजर को भी इंस्टॉल करी है, आगे के मरगाट पर, इसके मीटर पर करी है, पूरे टैंक पर करी है, और आपके साइड पैनल पर और आपके पीछे के मरगाट पर। पूरी बाइक पर हमने प्रॉपर फिनिशिंग से कटिंग करी है, प्रॉपर तरीके से पीपीएफ इंस्टॉल करी है। शाइनिंग आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर तरीके से और ज्यादा बढ़ चुकी है, और जो इसके स्क्रैचेस थे वो सारे इसमें रिमूव हो चुके हैं। जो भी हल्के फुल्के स्क्रैचेस थे वो सारे पीपीएफ में छुप जाते हैं। गाइस अब मैं पूछना चाहूंगा उनसे जिन सर की ये बाइक है, उनको हमारा काम कैसा लगा? आइए सर। हेलो सर, कैसे आप? मैं बढ़िया। और सर कहाँ से आए थे आप? मैं आया हूँ राजनगर से आए थे सर। जैसे हमने आपकी बाइक की पीपी इंस्टॉल करी है, कहीं से आपको लगता है ना इसकी पीपी इंस्टॉल हो गई या कहीं भी कटिंग वगैरह दिख रही हो? नहीं, आई मस्ट से यार सर्विसेज आर लाइक एक्चुअली फैबुलस एंड पीपीएफ मुझको बहुत ज्यादा पता नहीं था कि होता क्या है, कैसे होता है, बट दीस गाइस आर टेकिंग केयर ऑफ इट एंड द पीपीएफ लुक एक्चुअली वेरी नेचुरल। इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि पीपीएफ या पॉलिथीन लगा है नहीं लगा है। Quality also, in fact, they have given like a 5 years warranty, so I must recommend this. Seriously. Okay, thank you so much sir. Sure, yeah. तो सर जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पास काम कराना चाहिए नहीं चाहिए? Of course, 100% यार। एक बार आप ट्राई करो एक्टिव डिटेलिंग, इंदिरापुरम हार्डवेयर सेंटर के अंदर है, and I think you're gonna love it, like cars, bikes, everything. Okay, thank you sir. No worries.
गाइस अब आप लोग क्या करना है, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और विजिट आपको कहाँ करना है, एक्टिव डिटेलिंग स्टूडियो गाजियाबाद इंद्रापुर हैबिटेट सेंटर के अंदर। और मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, जब तक के जय हिंद जय भारत। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting